for some others also. Now, Bismillah Rahman Rahim, covalent bonding. Uh, if I define a type of bonding in which electrons are being shared between two atoms, और बहुत precisely अगर बात करें, having less difference in their electronegativity. All right. So they have less difference in their electronegativity. I'll just say, I already have discussed with you that if the atoms are far away in the periodic table, even that way, they have ionic bonding. But if they are very close to each other, like this, they have covalent. So they have, like, this is showing that they have less difference in their electronegativity. Okay. If I, Do they have to be in the same period? they could be, Okay. right? But there Yep. should be less difference in electronegativity. That's the, I. although we don't know about the values of electronegativity because that is not provided in the data booklet. But even then, I have to keep that fact in my mind that if they are close enough to each other, they would have covalent bonding. अच्छा, तो पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, फिर केसेस की तरफ चलेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड usually form between two non-metal, right? Mm. Less, yeah, low values of melting and boiling point, except giant structures. If it is not giant and if it is polar, then they have slightly high or very high melting and boiling point. Yep. But if they are simple molecular structure, even though they are polar, they have low melting and boiling point. Point number three, the non-electrolyte. Usually, non-electrolyte, those that don't allow electricity to move it through them. Yep. They're simple molecular and exist as solid, liquid, or all three states. They may be volatile at times, except of giant structure. Simple structures are volatile. Have you taken the screenshot of it? No, not yet. I'll take it. 1 second. All right. One is there? I haven't taken it yet. Okay. Um, okay, taken. Okay. Um, now,
if I talk about cases of, so the first thing that I should discuss, compounds of hydrogen. This is what where we ended in our last class. Like for example, HCl, H has one, Cl has one, two, three, four, five, six, and seven. So this makes H and Cl. H dash Cl. H2 with sulfur, whatever the configuration, like this was 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, whereas this has 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and 3p4. So if it is 3s2 and 3p4, so 3s2 are here, 3p4, 1, 2, 3, and 4. So there are two electrons which are unpaired. So this makes, 270. right? Yeah. This is the shell overlap diagram. What is that? Shell overlap diagram. But I should also know what is the orbital overlap diagram. Hydrogen has configuration 1s1. So what orbit it has, suborbit? S. Whereas chlorine has unpaired electron in its p. So p has a dumbbell shape, and this is S of hydrogen, chlorine. You can show it by three different ways. One, two, three. Similarly, sulfur has, if you open up its p configuration, 1, 2, 3, 4. So there are two electrons, py and pz, that are unpaired. So if I draw it, I can show it that way also. Py and pz. This is orbital overlap diagram. ठीक है बेटा? Yeah. This is bond diagram. This is shell diagram. Take a screenshot of it. Done. Now, these two cases were belonging to simple and general covalent bonding, right? But what if Yeah. I'm asked with what is a sigma bond and what are pi bonds? Sigma bond was what? The first covalent bond. Definition of sigma: first covalent bond formed between two atoms. Or I can say a share of electron occur between two nuclei of different atoms. So do ionic bonds not have sigma bonds? No, because in ionic we are not dealing with sharing of electron. We are only dealing with the transfer of electron. Okay. So they're non-polar and no sigma bonds or pi bonds either. It's like their own type of bonding, I guess.
Sorry, can you repeat? So in ionic bonding, there's no sigma bonds or pi bonds like at all. Just their own type of bonding. अच्छा एक मिनट. हाँ जी. Yes, ionic में once it is completely transferred, there's no point of sigma and pi left in it, Mm. right? Yeah, yeah, true. It's only about sharing. Sigma comes when sharing occurs. Now, for example, if you are talking about sigma bond between hydrogen and hydrogen atom, so where's the nucleus of it, Middle. right? And this is the nucleus, and this is the nucleus, Mm. right? So this is the sigma bond. Similarly, अब chlorine को देखते हैं. Chlorine has Cl2, that means Cl dash Cl, ठीक है? Yep. Yep. This is Pz and this is Pz of another chlorine. So this is the nucleus of each of the chlorine, and electron are shared between two of the nuclei. Electrons are shared between two of the nuclei. Of whatever case you see, it will be like this. The sigma bond should be between two nuclei. Okay. Okay. But what are pi bonds? So far, we haven't seen any case of pi bond. But pi bonds, sharing of electron. Oh, sir, can I screenshot the last one? Yeah, please. All right, done. Sharing of electron occur between two atoms, not between their nuclei. For example, अब इसकी example देखो. Pi bond can be second covalent bond shared between two atoms. It's a second covalent bond, not the first. First one was, so if I talk about O2, oxygen has two unpaired electron. One is on its py, another is on its pz. So if I'm making this, right? This is the sigma bond, the first bond. मैं इसको अलग color से show. This is a sigma bond. But for this pair, I have to show this by dotted line, a sharing happening between these two. ठीक है बेटा? So I can call Okay. this a pi bond. ठीक है? From both sides? From both sides. You have to show a common electron cloud from both sides. Okay. Or otherwise, you can also represent it that way. Electron share, electron cloud from both sides. So It's not, the first bond and the second bond are like they have different properties as well, because well, Bella Wala was just them connecting, nah? yes, This is electron clouds we add in. So yes. This is electron cloud, which is pi. Better use dotted lines. ठीक है बेटा? yeah. Okay, now see another case. N2, which has N triple bond. That means one of the bond is sigma. So if I Px of nitrogen, Py of nitrogen, Pz of nitrogen, Px of nitrogen, Py of nitrogen, Pz of nitrogen.
So the first bond is sigma. This is sigma. Another electron cloud. This is first pi, and this is second pi. Show them distinctly. Okay. Okay. So these are sigma and pi things, right? If I'm asked to draw N2H2, so there is these kind of bonding. Mm. So nitrogen has one of the pi bond between these two, hydrogen and hydrogen. Students usually make mistake कि वो orbitals के दरमियान distinguish नहीं करते. This, like, both of them are happening at pz, and py is in pi and px in sigma pi. Okay. ठीक है? Yeah. Then we have, after sigma and pi, we have cases of hybridization, which you have recently studied. Remember that? Yeah, I think so. It is an ability of altering orbits and suborbits in order to raise electrons in the valence shell. This is to raise electron in the valence shell, right? That means if they are not getting enough number of electrons, they hybridize to raise the number of electrons. Okay, beta? Yes, got it, sir. सर पिक्चर नहीं ली मैंने पिछले वाले की. अच्छा. The one before. Before this as well, I think. We have to study hybridization with respect to carbon. Carbon has electronic configuration 1s2, 2s2, and 2p2, right? Yep. So if I draw its shell diagram, it is clearly shown that it is not able to complete its octet with this structure only. Mm. Why? Because if it bonds over this and bond over that, how many electron will the valence shell get? That is 6. Yeah. So that means it needs to do some alteration because octet is necessary for period 2 element. So it will go with 3 different patterns: sp3 hybridization, sp2 hybridization, and sp hybridization. You have that lecture with you. Yep. Right. In sp3, carbon makes 4 sp3 orbitals. In sp2, carbon has, oh, I'm so sorry. It has 3 sp2 orbital and 1 pz, which is not altered. And in sp, and 2 orbitals that are not altered,
दैट्स राइट। ठीक है। Yeah. नाउ लेट मी mention in which condition carbon go for whichever. When carbon make 4 sigma bonds, when it makes 4 sigma bonds. For example, you talk about alkanes and alkyl groups. When carbon make 3 sigma and 1 pi bond, that means case of alkene or aldehyde ketone. अभी बनाता हूँ सारे. And when carbon make 2 sigma and 2 pi, case of cyanide or nitride, case of carbon dioxide, and case of alkyne. This depends, whichever case you are dealing with. So अब मैं तीनों केसेस, तीनों हाइब्रिडाइजेशन की एक एक एग्जांपल तुम्हारे सामने ड्रॉ करता हूँ. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी अल्केन की बात कर रहे हैं, और अल्केन में एक ऐसा मेंबर बनाते हैं, पहले तो बनाते हैं मीथेन. Sir, same picture. ओके. Second. Oops. 1 second. Okay, done. Okay. Methane, when carbon has to make 4 sigma bond. Right? 4 sigma bond. ये रहा न्यूक्लियस इसका, ये रहा न्यूक्लियस इसका, न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस. ये तो हो गया मीथेन का केस. अब देखते हैं ईथेन का केस. व्हेन देयर आर 2 कार्बन, जब भी 2 कार्बन आए और दोनों sp3 हाइब्रिड हो, तो इनको तुम किस अंदाज में ड्रॉ करोगे? एक सीधा एक उल्टा, फ्लिप फ्लॉप मेथड. वो ये कब करेंगे सर? When both carbon is sp3 hybridized. Okay. इससे आज बच्चे क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं? बच्चे यूं बना रहे होते हैं, ये sp3. अब अगर ये भी sp3 तुम इस तरह करके ओवरलैप करते हो, तो हाउ कैन इट बी अ सिग्मा बॉन्ड? इसका न्यूक्लियस ये रहा, इसका न्यूक्लियस ये रहा, राइट? मैं डिफरेंट कलर से शो. ये सिग्मा फिर नहीं कहलाएगा. और तुम्हें पता है कि sp3 में कार्बन सारे सिग्मा बॉन्ड बनाता है. तो सिग्मा बॉन्ड की शर्त क्या है? द शेयरिंग शुड अकर बिटवीन 2 न्यूक्लियाई. ऐसे ही है. और फर्ज करो तुम प्रोपेन की बात करते हो, एक ऐसे बनाओगे, एक ऐसे बनाओगे, एक ऐसे बनाओगे, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा. ठीक है. इसे हम यहाँ सब जगह हाइड्रोजन फिल. ठीक है. यानी फ्लिप फ्लॉप मेथड. बात आती है व्हेन कार्बन इज sp2, तो इसकी एग्जांपल कौन कौन सी? इसकी एग्जांपल पहली होगी C2H4 ईथीन. तो ईथीन बनाते वक्त क्योंकि कार्बन ने 3 ऑर्बिटल मॉडिफाइड बनाए हैं, एक अनमॉडिफाइड अनऑल्टर्ड, ये आ गया पाई बॉन्ड, ये आ गए सारे सिग्मा बॉन्ड. So you will draw this structure this way.
ठीक है बेटा. Yeah, I'm just taking a screenshot. Hmm. One more example for this is the structure of कीटोन. कीटोन का स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग, बल्कि एल्डिहाइड का पहले बनाते हैं. वी हैव CH3CHO इथेनॉल. एग्जामिनर कहता है इसका ऑर्बिटल ओवरलैप बनाओ. मुझे पता है ये CH3 अल्काइल ग्रुप है. इफ आई ड्रॉ इट्स डिस्प्ले डायग्राम इट विल बी लाइक दिस, है ना. Yeah. तो कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता हुआ नजर आया, इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिड है. इसमें कार्बन 3 सिग्मा बना रहा है और एक पाई बना रहा है, राइट. Mm. तो अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ. एक ये, एक ये, एक ये हो गया sp3 वाला कार्बन. और ये वाला जो है कार्बन sp2 वाला है. अब मुझे इसको देखभाल के बनाना है. एक ये, एक ये, एक ये हो गया sp2 और ये आ गया इसका. अब ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हैज py एंड pz अनपेयर्ड. एक को तुमने यू बना देना है. और ये इसका ये ताकि पाई बॉन्ड यू करके शो करो. This is carbon, this is oxygen, this is carbon, these are hydrogens, and this is the final hydrogen. ठीक है बेटा. Okay. Making sense. Yes. So, but 1 second. What? So actually, I'm just looking at the picture. So when you're drawing the second atom, Hmm. where you said flip-flop method, can you like explain that a little bit more? Hmm. While making Nico, first of all, identify the type of hybridization that they have. First, draw their displayed structure. This is structure. This is making 4 single bonds. This is making 3 sigma and 1 pi, or 2 single and 1 double bond, right? Wherever there is a double bond, that means one of them will be a sigma, another will be pi, right? So how many sigma bond are made Yeah. by this? 3 sigma, Great. right? And if it is 3 sigma, this would have what hybridization? P2. sp2. Now, let me redraw it. The first carbon, now let me draw them with different color. First carbon will be sp3 hybridized. sp3 means it has 4 orbitals. Another carbon should have sp2. अब sp2 तो ऐसा होता है ना, और एक pz इसका unhybridized. Now lift this and draw it over here with the carbon with sp3. एक, right? So both of the carbon are connected right now. Okay. Yeah. Now oxygen. Oxygen has configuration 1s2, 2s2, and 2p4. 2p4 matlab py and pz are not coupled. 1, 2, 3, and 4. Py and pz are left. So this is py, which is making sigma bond with carbon. And now let me draw pz that way so that I can easily show a pi bond between these two. Okay. And where the last hydrogen go, will come over here, which is making a sigma bond. Sorry. ठीक है बेटा. So this Yeah. is CH3 CHO ethanol structure. Okay. Now example of sp hybrid carbon. So for that we have two structure. First is CO2, and carbon would have what? sp hybridization. So sp means it has 2 orbitals with which it makes sigma, and 2 orbital with which it makes pi. This is py of carbon and this is pz of carbon.
and this is sp orbital different, a different sp orbital over here. And two oxygen, both oxygen have py and pz. So पहले वाले का पी वाई से बॉन्ड तुमने यूं किया, पी जेड से बॉन्ड तुमने यूं, राइट। और इसका पी वाई इसके पी वाई से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि पी जेड की एक्सेस यूं है। दूसरा ऑक्सीजन दैट वे, और इसको भी तुम चाहो तो तिरछा करके बना लो, राइट। Yeah. Or otherwise you can draw it. This is the shell diagram. Dot, 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 dot. लेकिन इस शेल डायग्राम में सिग्मा बॉन्ड का पता चल नहीं रहा है ना भाई? Yeah. तो इसलिए हम प्रेफर कर रहे हैं इस डायग्राम, which is telling me PZ, PY, PY, PZ. So screenshot. Okay, done. Okay. अब हमारे पास है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। What, like a covalent bond formed between two different atoms. A non-polar, a covalent bond formed between two same atoms. Oh, that's easy. लेकिन ये डेफिनेशन बॉन्ड की है, मॉलिक्यूल की नहीं है। पोलर मॉलिक्यूल इज समथिंग एल्स compared to, like, if, don't compare the definition of molecule with the bond. अब एग्जामिनर की देखो तरीका क्वेश्चन पूछने का। अब मीथेन का स्ट्रक्चर देखो, दिस इज मीथेन, राइट। ये ना बेटा? जी सर। ओके, अब जरा सोचो, आर दीज टू डिफरेंट बॉन्ड्स, टू डिफरेंट एटम्स? Yeah. Yeah, one is carbon, another is hydrogen. Yeah. These two. Different. Okay, now let me remove these lines first. अब ये बॉन्ड कौन सा होगा? दिस इज अ पोलर covalent bond according to the definition if two different atoms are participating in a covalent bond. But you need to see whether this molecule is polar or not. So now let me draw its bond diagram to make it a little simpler to understand. If this bond is polar, so this should be slightly negative and this should be slightly positive. These partial charges are coming between those atoms which are making polar covalent bond. These partial charges can't come between hydrogen and hydrogen because both of the hydrogen are pulling this electron pair with equal force of attraction. Right? So I cannot, unless I talk about induced dipole, I can't do that with them.
The polar covalent bonds usually show this polarity between sigma partial positive and partial negative. These are the signs, these are the indications that you can put up on any molecule. But the thing is, if this is partial positive, all of the hydrogen will be partial positive then, aren't they? True. Right? Because Yeah. the central carbon atom is pulling electron of each of the hydrogen. Now see, Yeah. this is having field of positivity. This is positivity, positivity. And if I bring external poles close to it, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वाला तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वंस दिस गेट क्लोजर, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को रिपेल कर देगा. सो आई कैन सेंस दैट one type of charge is blanketing entire molecule. Okay, I see. Entire molecule is crowded with or blanketed with partial positive charge. So both poles are not being attracted by each other. So I will say this is a non-polar molecule with polar covalent bonding. Whoa, wait, sir. Hmm. Isn't it getting attracted by the negative and then repelled by the positive? So For how is it being non-polar? polar, both poles should be attracted by the component of a molecule. Okay. Let's suppose if this is water, right? Oxygen is slightly negative. This is slightly positive. If I bring plus and minus close to it, this will be attracting this, this will be attracting this. That means half of the molecule is negative and half of the molecule is positive, so that it interact with neighboring molecule. Right? So this is the polar molecule. But this is non-polar because one type of charge is crowding or blanketing entire molecule. Okay. See I one see, more I example. First take a screenshot of it. Yep. Done. If you look at AlCl3, right? So this is partial positive, partial negative, partial negative. You must be thinking, sir, why you are calling this partial negative on the edges and central atom partial positive? और देखो मैं नेचर को देख रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की ज्यादा है ना. So this will be pulling electron towards itself and becoming partial negative. Yeah. Okay. So again, the same charge is blanketing entire molecule. And if I bring external plus minus, so this gets close to each other, negative repel negative. So both poles are not being attracted. Although this has polar covalent bonding, but the molecule is non-polar. Making sense? Yep. The third example for this, look at carbon dioxide molecule. Oxygen are partial negative, carbon is partial positive. So, and now if I bring a positive and negative species, so this will attract, but this repels this. This will not let it get close to it because both are negative. What if you put it like a really specific angle to that whole? Even if you do that, for example, you must be thinking, sir, is being very unfair making that big plus minus. Now let me make a smaller one. Right? Is that fine? Yeah. This is plus, this is minus. Now this is getting close to it. Right? Yeah. This has reached over here. Plus,
and minus. So this repels even then, Oh, okay. right? So this again non-polar, but with the case of Polar अब covalent. all alkenes are non-polar. Okay. ठीक है बेटा? Okay. Let me screenshot it. Is that making sense? Polar non-polar का? Yep. Got it. Screenshot taken. Should I show you previous page? नहीं ले लिया. Which one was that? What? ये? अच्छा नहीं, I got this. Okay. This is these are alkane and this is alkenes. Okay. This is CO2 carbon dioxide. ये वो मॉलिक्यूल हो गए जिनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग होने के बावजूद नॉन पोलर मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं. तो अब एक एस्पेक्ट और डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. इसमें सबसे पहले तुम हाइड्राइड्स के शेप देखो. ठीक है? हाइड्राइड्स में मेरे पास CH4 है, C2H5 है. C2H5. So I think can you repeat what you said before this? My internet cut off हो गया था. अच्छा, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे हैं. शेप ऑफ द मॉलिक्यूल में सबसे पहले हाइड्राइड्स की बात करेंगे. CH4, Okay. NH3, H2O, NHF. ये चारों हाइड्राइड्स हैं, हाइड्रोजन बेस्ड कंपाउंड. Yep. राइट. अच्छा, सब में पोल यानी बॉन्डिंग टाइप पोलर कोवेलेंट है. द ओनली मॉलिक्यूल दैट इज नॉन पोलर इज दिस. शेप को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास वेसेपर्स थ्योरी है. Weissenberg stands for valence shell electron pair repulsion theory. Valence shell electron pair repulsion theory. That's long. Yeah. That means the shape of the molecule is addressed by valence shell. ठीक है? Valence shell, the shape is explained by valence shell. ये तो एक बात हो गई. Valence shell of what? दूसरी कंडीशन, सेंट्रल एटम. ठीक है? सेंट्रल एटम डिसाइड्स एवरीथिंग. देखो इसमें भी सेंट्रल एटम, इसमें भी सेंट्रल एटम, इसमें भी सेंट्रल एटम. और सेंट्रल एटम का केस देखो बेटा उस वक्त तक एप्लीकेबल है जब तक मॉलिक्यूल का साइज स्मॉलर है. जैसे ही मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो जाता है तब हम नेट कोई शेप नहीं देते. फॉर एग्जाम्पल अब जरा देखो, हियर कार्बन इज हैविंग 4 बॉन्ड्स, H H H H. राइट? ये आ गई 4 बॉन्ड. तुम्हें कार्बन को स्टैंडर्डाइज कर लो कि कार्बन के दरमियान इन दो का बॉन्ड एंगल हमेशा 109.5. राइट? Yeah. अब यहाँ जो बातें याद रखनी है, एज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके दरमियान लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है सेंट्रल एटम के पास. अगर लोन पेयर होता जैसे नाइट्रोजन के पास, अब देखो यहाँ चौथी स्पीसी अवेलेबल नहीं है.
चौथी स्पीसी अवेलेबल नहीं है। एग्जैक्टली सेम अरेंजमेंट मुझे नजर आ रहा है हाइड्रोजन का ऑन द लोअर साइड, लेकिन ये जो टॉप वाला बॉन्ड है इसकी जगह कौन आ गया है? लोन पेयर, राइट? कैन यू सी दैट? Yeah. तो अब पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये तो पोलर पोलर मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी हो गई। लेट मी ड्रॉ इट। तो वही है। तो एक इनको अगर मैं कंपेयर करूं, एच 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 एच, कंपेयर अगर मैं इनको करता हूं इसके साथ, तो देयर इज दिस वन एच इज मिसिंग, Yeah. इसकी जगह लोन पेयर आ गया है यहाँ पे। Yeah. मुझे बॉन्ड एंगल्स उन अटैच्ड स्पीसीज के दरमियान फाइंड करने हैं जो इस सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है। पहले ये बॉन्ड एंगल कितना था? 109.5। क्यों? क्योंकि चारों के दरमियान एक ही जैसा कोई लोन पेयर नहीं था। अब इस बॉन्ड की जगह क्या आ गया? लोन पेयर आ गया। आई एम नॉट मेजरिंग दिस बॉन्ड एंगल, नो, दिस इज नॉट, आई एम मेजरिंग दिस बॉन्ड एंगल, ऑल्दो लर्निंग नॉट मेजरिंग। तो ये बॉन्ड एंगल अब स्क्वीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस लोन पेयर के आने की वजह से ये यहाँ से इसको रिपेल करेगा। जितना रिपल्जन बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल स्क्वीज होके, श्रिंक होके, छोटा होके 107, मतलब देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2.5 डिग्रीज कमिंग बिटवीन दीज टू। सिमिलर। Okay. अब देखो ये कौन है? H2O, है ना? Yeah. बिल्कुल इसी तरह वन मोर बॉन्डिंग स्पीसीज रेड्यूस्ड, और इसके कंपैरिजन में कितने? टू मोर बॉन्डिंग स्पीसीज आर रेड्यूस्ड। और Yeah. जितने बॉन्डिंग स्पीसीज कम हुई उतने लोन पेयर बढ़ गए। दो हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड एंगल कितना था प्रीवियस केस में? 107, जब एक लोन पेयर था। अब दो लोन पेयर है, यही बॉन्ड एंगल मजीद डिक्रीज हो जाएगा, -2.5 एंड बिकम्स 104.5 डिग्रीज। Okay. Okay. Got नाउ it. अब ये जो इमेजिनेशन बनाई है हमने, ठीक है, इसको जरा बड़े मॉलिक्यूल, अच्छा पहले तो इसके शेप को कहते हैं टेट्राहेड्रल, इसे कहते हैं ट्राइगोनल, पिरामिडल, और इसे कहते हैं बेंट, वी और एंगुलर। बेंट, वी एंड एंगुलर। अब एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है, वेरेवर आई फाइंड दीज एटम्स, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3, CH2, CH2OH, यानी ये एक अल्कोहल है। तो ये वाला CH3 sp3 हाइब्रिडाइज, ये वाला CH3 CH2 sp3 हाइब्रिडाइज, तीसरा CH3 sp3, यानी ये सारे बॉन्ड एंगल कितने होंगे? 109.5। लेकिन अब यहाँ पे Okay. एक पोजीशन पे O लगा है, दूसरी पोजीशन पे H लगा है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, दो बॉन्डिंग पेयर है, तो ये बॉन्ड एंगल मुझे क्या कहना पड़ेगा? 104.5। Whenever oxygen Okay. is having two lone pairs and two bond pair, no matter whatever the species, the bond angle will be 104.5। 104.5. एक और देखो, CH3OCH3, ये एग्जाम क्वेश्चन है। अब मुझे इसको तो मैंने बना लिया टेट्राहेड्रल, ये ऑक्सीजन, ये भी आ गया टेट्राहेड्रल, राइट? So this bond Yeah. angle will be oxygen with two lone pair
एक ये रहा, एक ये रहा, and two bonding pair, the bond angle will be 104.5. इसी तरह देखो CH3NH2, इसका मतलब कुछ ये सिचुएशन है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 और 2. एक लोन पेयर है, और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसका बॉन्ड एंगल तो कितना होगा, 109.5 ही रहेगा। लेकिन नाइट्रोजन के पास वापस चलो, नाइट्रोजन 107. 107, so this bond will be 107 degrees. Is that making sense? Yeah. Yeah. अब जरा देखो इन sp2 hybrid carbon, this is sp2 hybrid. Whenever you find double bond between carbon and carbon, this is called sp2 hybrid carbon. This bond will always be 120 degree. जब भी कार्बन sp2 नजर आए, चाहे वो अल्कीन का केस हो, चाहे वो एल्डिहाइड का केस हो, तो सर ये वाला तो 4 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तो यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 है तो 109.5। लेकिन इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन को देखो, क्या ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120। हम्म, ठीक है बेटा। तो वैसे दोनों का होगा हम्म, या सारे बॉन्ड दोनों एंगल का होगा? 120। ओके ओके। अच्छा अब देखो CH3CONH2, ये दोनों में एक साथ लगा देता हूँ, तो इसका बॉन्ड, पहले तो मैं बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। राइट, कुछ ऐसा हो। अब एग्जाम में कह रहे हैं बॉन्ड ए, बी और सी, जरा प्रिडिक्ट करो क्या बॉन्ड एंगल होंगे। A, B and C. हेलो, थैंक यू। अच्छा एक सेकंड से। टेक योर टाइम। A is ये कौन सा था, एक सेकंड। A is 109.5, शाबाश। B is 107, ओके। and C, wait, B is एक second. B is 120 शाबाश। and C is कौन सा था? C is 107. शाबाश बेटा, बिल्कुल परफेक्ट। नाउ एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ओहो, आई रीच टू द मैक्सिमम स्लाइड, 20 अपनी स्लाइड पे जा नहीं रहा Uh-huh. है। CH, अब बताओ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। क्विकली। Okay, A is 109.5, शाबाश। B is 104, 0.5। yeah, 0.5. C is C का है, अच्छा C वहाँ है 120, 120। D is 107. शाबाश। ये यहाँ इसको एंड करते हैं। आई होप तुमने कुछ सीखा होगा आज की क्लास में। जी सर। ठीक है, कुछ ठीक बॉन्ड है। एंगल्स तक पहुंच गए, 2-3 स्ट्रक्चर स्पेशल बाकी हैं, वो इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में ओके, कवर कर दूंगा। इंशाल्लाह सर। सर कैन यू सेंड एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इसके नोट्स जो होते हैं जैसे आपने उसके भेजे थे?
ऑर्गेनिक है। ओके, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स भेजता हूँ। आज इसको खत्म कर